Hello, good morning students. This is Neeraj Paul from Malpur Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. Once again, I welcome you to online classes. Students, today I am going to explain chapter 8, that is Internet and its services. Okay? Chapter 8. The name of this chapter is the internet and its services. Okay, the internet and its services. This is chapter 8. Actually, in physical class I have explained this chapter, but once again I am going to revise this chapter. As we know, last 3 or 4 days school were open, but the students quantity were less. Due to this reason I am going to revise this chapter. Okay, chapter 8, the internet and its services. Okay, first of all you need to know what is internet. What is internet? Okay, students, internet is stand for interconnected network. You can say internet is stand for interconnected network. Okay, internet is stand for interconnected network, and internet is popularly known as net. इंटरनेट इज पॉपुलरली नोन एज नेट. जैसे हम सभी लोग जो है इंटरनेट को नेट कहते हैं. ये नेट के नाम से पॉपुलर है. सभी लोग कहते हैं हमारा नेट खत्म हो गया है, हमारे मोबाइल में नेट नहीं है. हाँ, थोड़ा आप अपना नेट शेयर करिए. ठीक है, इंटरनेट इज पॉपुलरली नोन एज द नेट. ओके, हियर वन थिंग, नेटवर्क. यहां देख सकते हैं नेटवर्क. नेटवर्क क्या होता है? व्हाट इज नेटवर्क? व्हाट इज नेटवर्क? सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज नेटवर्क? स्टूडेंट्स, a network is a group of two or more connected computers. A network is a group of a network is a group of two or more connected computers. नेटवर्क क्या है? जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क. दैट इज कॉल्ड नेटवर्क. अ नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर कनेक्टेड कंप्यूटर्स. ओके स्टूडेंट्स, इंटरनेट इज द लार्जेस्ट नेटवर्क. Internet is the largest network. In network, internet is the largest network which includes millions of computers across the globe. पूरे ग्लोब पे. ठीक है, सपोज दैट दिस इज ग्लोब. इंटरनेट पूरे वर्ल्ड वाइड में सबसे बड़ा नेटवर्क है. इसमें मिलियंस बिलियंस कंप्यूटर्स आपस में क्या होते हैं? इंटरकनेक्टेड होते हैं. ठीक है, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू each other. The network
is formed through telephone wires, cables, satellite, and so on. When computers are linked over the internet, they are able to send and receive all kinds of information such as text, videos, voice, and so on. Clear, everyone? Once again, look, what is internet? Internet is stand for interconnected network, and internet is popularly known as the net. What is network? Second question is, what is network? A network is a group of two or more connected computers. मतलब जहां दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हो, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क. दैट इज कॉल्ड नेटवर्क. ओके. इंटरनेट इज द लार्जेस्ट नेटवर्क. In network, internet is the largest network, and the network is formed through telephone wires, cables, satellite, and so on. When computers are linked over the internet, they are also able to send text messages, videos, voice messages, and so on. Clear, everyone? Now come to the next topic, that is history of internet. Okay, let me erase this. Our next topic is history of internet. Okay. Next topic is history of internet. Okay. History of internet. Students, the term internet was introduced in 1969. You can say the invention of internet was in 1969. 1969 में इंटरनेट का इन्वेंशन हुआ बाय यूनाइटेड स्टेट डिफेंस डिपार्टमेंट. यूएसए के डिफेंस डिपार्टमेंट ने जो है 1969 में इंटरनेट का आविष्कार किया. फर्स्ट इंटरनेट नेम वाज एर्पानेट. सबसे पहले जो इन्होंने इन्वेंशन किया उसका नाम दिया एर्पानेट. एर्पानेट. इंटरनेट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1969 बाय यूएसए डिफेंस डिपार्टमेंट. यूएसए के डिफेंस डिपार्टमेंट ने 1969 में इंटरनेट का इन्वेंशन किया. जो सबसे पहले उन्होंने उसका नाम रखा, उनका नाम रखा ARPANET. ओके. वेयर A is stand for advanced, R is stand for research, P is stand for project, A is stand for agency, and net is stand for network. ओके. सबसे पहले जो इन्होंने नाम दिया एर्पानेट. एर्पानेट का फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क. एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क. क्लियर एवरीवन?
This network was established to share information on research and development of science and technology. Understand? And ARPANET was built to set up effective communication between military personnel and university researchers. ARPANET का मेन उद्देश्य इंफॉर्मेशन शेयर करना था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, that is basic terms related to internet. Once again, look at the board. Internet, I have already explained you. Internet is stand for interconnected network. And network, what is network? A network is group of two or more connected computers. Okay, internet is popularly known as net. Internet is the largest network in which millions of computers connected to each other. Internet was introduced in 1969. इंटरनेट को सबसे पहले 1969 में जो है बनाया गया. किसके द्वारा बनाया गया? तो यूनाइटेड स्टेट के डिफेंस डिपार्टमेंट के थ्रू जो है इंटरनेट का इन्वेंशन हुआ. सबसे पहले जो उन्होंने नाम रखा था इसका ARPANET, ARPANET, where A is stand for advanced, R is stand for research, and P is stand for project, and A is stand for agency, and NET is stand for network. Clear everyone? This is the full form of ARPANET, Advanced Research Project Agency Network. Students, you have to learn it. These all things you have to learn. What is internet? What is network? What is the popular name of internet? And history of internet, in which year it was invented, who invented it, what was the first name of internet, what is the full form of ARPANET, where A stand for, R stand for, P stand for, okay, A stand for, and NET stand for. These all things you have to learn. Clear? And the next topic, that is basic terms related to the internet, I will explain in my next video lecture. Till then students, goodbye. Thank you for watching.